Greetings everyone, welcome to English Talk. Today we will learn a new story named The Foolish Pandit. Let's get started. The Foolish Pandit. A foolish Pandit named Gopinath worshipped Goddess Durga wholeheartedly for days. Goddess at last heard his prayers and visited him. She smiled. I am impressed by your devotion. Ask for a wish. Gopinath replied, give me the power of immortality. Wish granted, replied the goddess. The very next moment, Gopinath was holding a bundle of leaves. Just squeeze a few leaves and pour the juice on a dead body. The deceased creature will instantly come to life, said the goddess and vanished. Initially, Gopinath jumped with joy, but suddenly a thought struck him. What if it's just a joke? Then I shall be mocked by the entire village. A foolish Pandit named Gopinath worshipped goddess Durga wholeheartedly for days. गोपीनाथ नामक एक मूर्ख पंडित ने कई दिनों तक देवी दुर्गा की पूरे मन से पूजा की. Goddess at last heard his prayers and visited him. आखिरकार देवी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके पास आई. She smiled. वह मुस्कुराई. I am impressed by your devotion. मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हूँ. Ask for a wish. कोई इच्छा मांग लो. गोपीनाथ replied, give me the power of immortality. गोपीनाथ ने उत्तर दिया, मुझे अनैतिकता की शक्ति दो. विश ग्रांटेड. इच्छा पूरी हुई. रिप्लाइड द गॉडेस. देवी ने उत्तर दिया. द वेरी नेक्स्ट मोमेंट गोपीनाथ वॉज होल्डिंग अ बंडल ऑफ लीव्स. अगले ही पल गोपीनाथ के हाथ में पत्तों का एक बंडल था. जस्ट स्क्वीज अ फ्यू लीव्स एंड पोर द जूस ऑन अ डेड बॉडी. बस कुछ पत्ते निचोड़ो और उसका रस किसी मृत शरीर पर डालो. द डिकेज्ड क्रिएचर विल instantly come to life, said the goddess and vanished. मृत प्राणी तुरंत जीवित हो जाएगा, देवी ने कहा और गायब हो गई. Initially, गोपीनाथ jumped with joy. पहले तो गोपीनाथ खुशी से उछल पड़ा, but suddenly a thought struck him. लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया. What if it's just a joke? अगर यह मजाक हुआ तो? Then I shall be mocked by the entire village. तो पूरा गांव मेरा मजाक बनाएगा. So it's better to test whether the leaves are genuine or not. इसलिए यह जांचना बेहतर है कि पत्ते असली हैं या नहीं. On his way back home, he saw a dead tiger laying on the ground. To clear his confusion, Gopinath crushed the leaves between his palms. A few drops of the juice dropped on the dead tiger. The tiger got alive within seconds.
and roared loudly. Realizing the blunder committed by him, Gopinath screamed, "Oh no, someone save me." On his way back home, घर वापस आते समय, he saw a dead tiger laying on the ground. उसने देखा कि एक मरा हुआ बाघ जमीन पर पड़ा हुआ है. To clear his confusion, अपनी उलझन को दूर करने के लिए, गोपीनाथ crushed the leaves between his palms. गोपीनाथ ने पत्तों को अपनी हथेलियों के बीच कुचला. A few drops of the juice dropped on the dead tiger. रस की कुछ बूंदें मरे हुए बाघ पर गिरीं. The tiger got alive within seconds and roared loudly. बाघ कुछ ही सेकंड में जिंदा हो गया और जोर से दहाड़ने लगा. Realizing the blunder committed by him, अपनी गलती का एहसास होने पर गोपीनाथ चिल्लाने लगा. गोपीनाथ screamed, "Oh no, अरे नहीं, someone save me, कोई मुझे बचाओ." But it was too late. गोपीनाथ was devoured by the tiger. पर वह तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गोपीनाथ को बाघ निगल गया. If you like this story, please like, share and subscribe. Thanks for watching.